बता दिए हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगी आपको बैरियर के बारे में, ठीक है, जो कि बेसिकली अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो कुछ क्लासिफिकेशन और है बैरियर्स, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बैरियर जो है एक तरह की रुकावट होती है ना, एक डिस्टॉर्शन होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि कम्युनिकेशन के बीच में अकर करता है, ठीक है। अगर बैरियर है तो फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, तो इस रुकावट की वजह से कभी भी बैरियर कभी भी जो है, जो भी आप कहना चाह रहे हो वो मैसेज कन्वे ठीक से नहीं हो पाएगा। और बैरियर दोनों साइड से हो सकता है, सेंडर के साइड से भी हो सकता है और रिसीवर के साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर से, ठीक है। सो अ बैरियर एक्ट्स लाइक अ सीव, छन्नी, जैसे वो आटा नहीं जिससे चालते हैं छन्नी, ठीक है, तो बिल्कुल वो उस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें कुछ पार्ट ही जो है वो ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है। सो अ बैरियर एक्ट्स लाइक अ सीव, allowing only part of the message to filter through, and as a result the desired response is not achieved, ठीक है। So to communicate smoothly and effectively in an organization, irrespective of your position, you need to know how barriers operate, why they cause misunderstanding, and how to minimize their negative impact. तो किसी भी बैरियर को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि बैरियर क्या है और कब कब हो सकते हैं। बिकॉज जब आपको पता होगा तभी आप वो बैरियर को आप अवॉइड करेंगे कि आपके साइड से ऐसी कोई गलती ना हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बोलते हो, है ना, और आप बोलने के बाद आप तुरंत क्लैरिफाई करते हो कि अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी टोन गड़बड़ हो गई है, कुछ और ऐसा हो गया है ना, तो आपने अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए आपने ये चीज भूली है, ठीक है। सो हाउ ऑफन हैव यू सेड आई मेंट टू से दिस एंड नॉट दैट, मतलब कि आप अवॉइड कर रहे हो कि अरे बैरियर ना हो जाए, इसलिए आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है। So even with the best intentions, communication barriers crop up and our written and spoken messages are misunderstood. If we classify barriers according to the processes of message information and delivery, we can identify three types: intrapersonal, interpersonal and organizational, ठीक है। तो तीन टाइप के barriers होते हैं: intrapersonal, interpersonal और organizational barrier, ठीक है। और ये आपके स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल बैरियर बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आप खुद से बात करते हो। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है कि जब आप खुद से बात करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो जाती है ना, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, आप खुद से बात करते हो, आप सॉर्ट आउट करते हो, आप सोचते हो, तो इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर में क्या है। So individuals are unique because of differences in perceptions, experiences, education, culture, personality, etc. So we as a human being, we all are unique, ठीक है। We as an individual are unique, हम सब अलग हैं भाई। आपकी सोच अलग होगा, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका कल्चर अलग होगा, आपकी एजुकेशन अलग होगी, आपका परसेप्शन अलग होगा, आपकी पर्सनैलिटी अलग होगा, सब कुछ। इनफैक्ट हमारे सोचने का तरीका अलग होगा। एक ही सिचुएशन अगर हम लोग के सामने रख दी जाएगी तो आप कुछ और उसका इन्फ्रेंस निकालोगे, मैं कुछ और निकालूंगी, है ना। इनफैक्ट हम सब कुछ ना कुछ अलग सोच होगी हम लोग, ठीक है। एक मूवी अगर हम लोग देख लें सपोज, ठीक है, तो उस मूवी को देखने के बाद भी आपका कुछ और थॉट आएगा, हमारे दिमाग में कुछ और थॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, है ना, हम सबकी अलग सोच है, ओके। सो ईच ऑफ अस इंटरप्रेट्स द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज as our thinking varies, and these differences lead to certain inbuilt or intrapersonal barriers. So कुछ cause है interpersonal barrier के: wrong assumption, wrong inference, varied perception, blocked category, differing background, categorical thinking। जैसा कि मैं आज जब आपको मैं semantic channel और नॉइज चैनल पढ़ा रही थी तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि इसमें से कुछ ऐसे टाइप कॉजेज हैं जो आपको आगे भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स वहां पे हमने देखे और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे इन हेड्स के थ्रू, ठीक है, तो जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले रॉन्ग असम्पशन की बात करते हैं।
तो कभी कभी क्या होता है कि हम रॉन्ग अज्यूम कर लेते हैं, हम गलत अज्यूम कर लेते हैं कि अरे सामने वाले को तो पता है सब कुछ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले को पता नहीं होता है कुछ, और हमने तो अज्यूम कर लिया है भाई कि पता है सामने वाले को, तो जिसकी वजह से हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं सामने वाले को, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से बैरियर हो जाता है और सामने वाले को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये है कि सपोज एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट से कहती है कि भाई आप मेडिसिन जो है सिर्फ SOS लेना, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को SOS का मतलब पता हो। अब डॉक्टर ने भाई अपनी टर्मिनोलॉजी में, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो है टेक्निकल जार्गन में उसने समझा दिया कि भाई SOS लेना। अब ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को पता हो कि SOS का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसने रॉन्ग अज्यूम किया है, यहाँ पे उसका रॉन्ग अजम्पशन था कि उसे लगा, डॉक्टर को ये लगा कि पेशेंट को इसका मतलब पता है। तो इससे उसने क्या किया, उसने एक बैरियर क्रिएट कर लिया, ठीक है। हालांकि SOS का मतलब होता है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ठीक है। So for example, when a doctor tells a patient that he has to take some medicine only SOS, that is during an emergency, without knowing whether the patient understands the term SOS, she is creating a barrier in their communication. Here the doctor has made a wrong assumption about the patient's level of knowledge. The wrong assumptions are generally made because the sender or the receiver does not have adequate knowledge about the other's background or entertains for certain false concepts which are fixed in his or her mind. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सेंडर या रिसीवर दोनों के साइड से ये हो सकता है रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। और दोनों को ही एडुकेट नॉलेज नहीं होती है कि उन्हें पता हो कि सामने वाले को ये चीज पता भी है या नहीं, उसके बैकग्राउंड के बारे में आइडिया नहीं होता है, ठीक है। सो टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स एज अ कम्युनिकेटर, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द लिसनर। तो आपको हमेशा, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको हमेशा खुद को जो है रिसीवर के साइड पे रख के सोचना है, ठीक है, कि अगर मैं रिसीवर होता तो फिर क्या होता, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज विल प्रिवेंट मेकिंग रॉन्ग assumptions अबाउट द रिसीवर। दूसरा है वेरीड परसेप्शंस, ठीक है। हम सबकी जो है परसेप्शन दूसरा होगा, एक ही चीज रखी जाएगी हम लोग के सामने, लेकिन हम लोग कि उसके बारे में अलग अलग विचार होंगे, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें कि 6 ब्लाइंड मैन होते हैं, 6 अंधे आदमी होते हैं, ठीक है। और उनका डिस्क्रिप्शन एलिफेंट के बारे में, ठीक है। क्या होता है कि जो 6 ब्लाइंड मैन होते हैं, 6 ब्लाइंड मैन होते हैं, उनके सामने एक हाथी आता है। वो देख तो पाते नहीं वो क्या है, ठीक है, क्योंकि वो अंधे होते हैं। तो वो हाथी का अलग अलग पार्ट वो लोग छूते हैं, और सब वो छूते हैं वो लोग। उसके बाद कोई बोलता है कि वो फैन है, कोई बोलता है कि वो रोप है, कोई बोलता है कि वो वॉल है, कोई बोलता है कि वो स्वॉर्ड है, कोई बोलता है कि वो स्नेक है, और कोई बोलता है कि ट्री है। तो सबने जो है क्या किया, सारे ब्लाइंड मैन ने क्या किया कि अलग अलग हाथी के पार्ट से जो है परसेप्शन बनाए कि हाँ ये चीजें, ठीक है। और उसमें से कोई भी गलत नहीं था, क्योंकि अगर आप एलिफेंट की बॉडी को अगर आप सोचोगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्चुअली इन्हीं चीजों से कुछ मिलते जुलते हैं, तभी उन्होंने एक अपना परसेप्शन बनाया। So we all know the story of 6 blind men and the description of an elephant. The elephant was perceived by each man as fan, a rope, a wall, a sword, a snake, and a tree. None of the blind men were wrong, as a part of the elephant's body touched by each man compared well with the various parts they named. And this is how different individuals hold different viewpoints about the same situation. So similarly, individuals in an organization also perceive the same situation in different ways. Let us take the case of disagreement between two individuals. If you are close to one of them, you are likely to be biased. Suppose, then let me read this and then I'll explain. So you may perceive your friend's argument as correct and hence may not be able to appreciate her opponent's point of view. So it is all about matter of perception. तो अब suppose दो लोग हैं, तो दो लोगों में आपस में लड़ाई हो रही है, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो इवन इफ अगर आपका फ्रेंड गलत भी होगा तो भी आप वहां पे बायस्ड हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा, आप ये परसीव करोगे कि नहीं जो मेरा फ्रेंड है वो सही है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है कि वो आपका एक परसेप्शन है, वो हो सकता है वो गलत हो, है ना, सामने वाला उसका ओपोनेंट सही हो, लेकिन ये आपने परसीव कर लिया है। So the best way to overcome this barrier is to step back and take a wider, unbiased perspective of the issue. Next है different backgrounds. तो हम सबके अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, किसी का भी सेम बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड डिफरेंट बहुत से बेसिस पे हो सकते हैं, एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। सो नो टू पर्सन्स हैव द सेम बैकग्राउंड. बैकग्राउंड्स कैन बी डिफरेंट ड्यू टू different education, culture, language, environment, financial status, etc. Our background plays a
significant role in how we interpret a message. तो हमारा background बहुत ही significant role play करता है, उसका बहुत ही important major role होता है, जिससे हम जब हम कोई मैसेज इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है. So at times something not experienced earlier is difficult to interpret or appreciate. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है. So think of a class where the professor talks about his rock climbing adventure. So students who have experienced rock climbing may be able to appreciate the professor's talk, while others who have never been into adventure sports may not find it interesting at all. अब suppose कोई प्रोफेसर है, वो क्लास में रॉक क्लाइंबिंग एडवेंचर के बारे में बता रहा है, या कोई शाहरुख खान के बारे में डिस्कस कर रहा है, या कोई विराट कोहली के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है. तो अगर आपको अगर आपने शाहरुख की मूवीज नहीं देखा, अगर आप क्रिकेट के फैन नहीं हो, और अगर आपने रॉक क्लाइंबिंग नहीं किया है, तो आपको इन चीज़ों में डिस्कशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है इससे. हालांकि जिनको शाहरुख की जिन्होंने मूवीज देखी हैं, जो क्रिकेट के फैन हैं, और जिनको रॉक क्लाइंबिंग जिन्होंने करी, उनको इन बातों में बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड. सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंप्यूटर कंपनी would not make much sense to a group of doctors if in his or her presentation she goes into details about the hardware aspects of the computer that he or she plans to install in a hospital. अब suppose किसी हॉस्पिटल में कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, ठीक है. अब कंप्यूटर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो डॉक्टर को क्या बोलता है, वो हार्डवेयर के बारे में डिटेल में बताने लगता है. तो डॉक्टर को इसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड नहीं है ना. और अगर यही सपोज कंप्यूटर इंस्टॉल करना है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी कंप्यूटर कंपनी में, वहां पे अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई देगा तो उसे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. वहां पे लोगों को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वहां पे उनका बैकग्राउंड ऐसा है, ठीक है. सो टू enhance communication skills, it is necessary to know the background of the audience. So this information can accordingly be used to construct the message. So empathy or identification with another person is the solution to this barrier. We must make an effort to understand what the listener can find difficult to comprehend in our message because of the difference between our background and that of the listener. The language understood by the receiver should be used to avoid ambiguity and reduce multiple meanings. The exact meaning of a word resides in the mind of the speaker. Therefore, one ought to be cautious while using words, because the multiple meanings of a word can astronomically increase the problem of communication barriers. A word can have several connotations, that is implied meanings and definitions. The more a word is prone to multiple meanings, the greater are the chances of it being misunderstood. A conscientious speaker is careful to explain her message in context by rephrasing and repeating words that can be confusing. So it is really important that you should avoid this kind of barrier. The next cause is wrong inference, ठीक है. यहाँ पे क्या है कि सपोज यहाँ पे भी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है. So suppose you have returned from a business trip and you find that two of your colleagues are absent. They do not turn up for several days. Since there is a recession on, you draw an inference that they have been laid off. ठीक है. अब क्या होता है कि आप एक बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं और आप क्या नोटिस करते हैं कि they do not turn up for several days. Since there is a recession on, you draw an inference that they have been laid off. ठीक है. अब क्या होता है कि आप एक बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं और आप क्या नोटिस करते हैं कि आपके दो कोलीग जो हैं वो एब्सेंट है, ठीक है, वो बहुत दिन तक नहीं आ रहे ऑफिस, ठीक है. अब मार्केट में जो है मंदी चल रही है, रिसेशन है, तो आपको ऐसा लगता है, आपने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करा कि हो सकता है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फैक्ट क्या है? द फैक्ट इज दैट दे हैव बीन प्रमोटेड एंड सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. अब सच्चाई ये है कि एक्चुअली उनका प्रमोशन हो गया और उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है. So this is an example of fact inference confusion. It has happened because you fail to distinguish between what actually exists and what you had assumed to exist. Inferences are more dramatic than facts, and for this reason, they can provide more scope for gossip and humor to spread. When professionals analyze material, solve problems, and plan procedures, it is essential that inferences be supported by When professionals analyze material, solve problems, and plan procedures, it is essential that inferences be supported by facts. System analysts, marketing specialists, advertisers, architects, engineers, designers, and others must work on various premises and draw inferences after collecting factual data. When presenting any inference,
In the course of your work, you could use qualifiers such as evidence suggests or in my opinion to remind yourself and the receiver that this is yet not an established fact. तो जब भी आप ऐसा कोई आप कोई चीज बात प्रेजेंट कर रहे हो तो ये एडवाइजेबल है कि आप इस तरह का वर्ड यूज कर लें, द एविडेंस सजेस्ट या इन माय ओपिनियन। तो इससे सामने वाले को ये पता लग जाए कि ये कोई पूरी तरह से ये सच्चाई नहीं है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं या ऐसा। नेक्स्ट कॉज है आपका ब्लॉक एविडेंस सजेस्ट या इन माय ओपिनियन। तो इससे सामने वाले को ये पता लग जाए कि ये आप कोई चीज बात प्रेजेंट कर रहे हो तो ये एडवाइजेबल है कि आप इस तरह का वर्ड यूज कर लें, द एविडेंस सजेस्ट या इन माय ओपिनियन। तो इससे सामने वाले को ये पता लग जाए कि ये कोई पूरी तरह से ये सच्चाई नहीं है, एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं या ऐसा एविडेंस के हिसाब से बातें करी जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉज है आपका ब्लॉक्ड कैटेगरी। इसके बारे में भी हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा था, अगर याद हो तो आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। ठीक है, सो इन जनरल we react positively to information only if it is in consonance with our own views and attitudes। तो अगर हम कोई ऐसी चीज है जो हमें सही लगती है, जो हमारे अकॉर्डिंग है, हम उसी को हम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। सो कॉन्वर्सली when we receive information that does not conform to our personal views, habits and attitudes or appears unfavorable to us, we tend to react negatively or even disbelieve it। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं पसंद है या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पसंद है तो हम उससे हम उसके लिए बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। इवन हम कभी कभी तो हम मना कर देते हैं कि नहीं ये सच ही नहीं है। ठीक है, सो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर डूइंग अ केस ऑफ ब्लॉक्ड कैटेगरी। So rejection, distortion, and avoidance are three common undesirable and negative reactions to unfavorable information. Communication and other technologies are advancing so rapidly today that many people find it difficult to quickly adapt themselves to these developments, which help expedite the communication process. Such people tend to resist and criticize them. And this is the result of having a closed mind. So such people are called misogynist. So the one who have blocked categories, blocked mental status, they are known as misogynists. So such people tend to ignore variations and differences, which leads to unreliable conclusions. Some people have certain prejudices so deeply embedded in their mind that these cannot be challenged. Similarly, people who are very rigid in their opinions may face problems in communicating effectively. For example, one of your fellow students may think that only students of science are good in reasoning. Others might be of the opinion that young executives are more efficient than the or face problems in communicating effectively. For example, one of your fellow students may think that only students of science are good in reasoning. Others might be of the opinion that young executives are more efficient than the older ones. So, जैसे कि सपोज आपके कोई फेलो स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ हैं, वो ये सोचते हैं कि जो स्टूडेंट ऑफ साइंस हैं वो रीजनिंग में अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि अगर आप सोच लोगे कि अरे मेरी मैथ्स नहीं अच्छी है ना, और इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा ये वाला, ठीक है, तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये आप ब्लॉक कैटेगरी का काम कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, या कुछ लोग सोचते हैं कि जो यंग एग्जीक्यूटिव है वो ओल्ड एग्जीक्यूटिव से वो बेटर है, मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये लोग भी बेसिकली ब्लॉक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बिकॉज वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आगे की चीजें, डेविएशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ब्लॉक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बिकॉज वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आगे की चीजें, डेविएशन, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलग चीज है, जो बाहर है, वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दे फॉल इनटू ब्लॉक कैटेगरी। सो
कैटेगोरिकल थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉज इज कैटेगोरिकल थिंकिंग। सो कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पैंसोफिस्ट, ठीक है, पैंसोफिस्ट। So people who feel that they know it all are called pansophists. So this type of thinking exists in people who feel that they know everything about a particular subject, therefore refuse to accept any information on that topic. तो जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है, तो आप उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे तो वो सुनेंगे नहीं ठीक से, उन्हें लगेगा कि अरे मुझे तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कैटेगोरिकल थिंकिंग। So for example, in a general body meeting of your organization, you are to be briefed about the annual budget. However, you do not pay attention because you feel that you have already been briefed about it by your secretary the previous day. Later, you propose that new vehicles have to be bought. Imagine your embarrassment when you realize that the topic was discussed and the discussion has already been taken in the general body meeting. So this type of thinking can pose a major barrier, leading to a failure in communication. In such instances, the receivers refuse information because of their know-it-all attitude. The clue to detecting this barrier in ourselves and in others is the use of words like all, always, everybody, everything, every time, and their opposites like none, never, nobody, and nothing. So, if a message contains too many of these words, then there is a fair chance of the word communication. So, if a message contains too many of these words, then the message contains too many of these or nobody and nothing. So, if a message contains too many of these words, then there is a fair chance of the word communicate of the fair chance of the communication getting distorted. So, to avoid this barrier, substitute these words with phrases like in most situations or most likely. And you have to label your opinions with phrases like it appears to me or the evidence indicates. If your data is insufficient, it is better to admit that you are unaware of the rest of the information rather than being indirect. So to sum up, इसको summarize करते हैं. So good communicators should be non-judgmental, they should be empathetic, they should not assume anything, they should stick to the subject, they should listen and above all paraphrase. And remember that generalizations do not always hold good in all situations. Next classification is interpersonal barrier. तो बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ बात करते हैं इंटरपर्सनल बैरियर से पहले। तो जब दो ह्यूमन बीइंग या दो से ज्यादा ह्यूमन बीइंग में जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसे इंटरपर्सनल बैरियर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने इंट्रापर्सनल पढ़ा था कि जहाँ पे आप खुद से बात करते हो, दैट इज इंट्रापर्सनल। लेकिन जब दो ह्यूमन बीइंग या दो से ज्यादा ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, उनमें बातचीत हो रही है, तो उसे बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल बैरियर की बात करते हैं। सो इंट्रापर्सनल बैरियर्स stems from an individual's attitudes or habits, whereas interpersonal barrier occur due to the inappropriate transaction of words between two or more people. अब जो interpersonal barrier था, जैसा कि हमने देखा, वो आपके अपने खुद के attitude या habits की वजह से occur हो रहे थे। लेकिन जो interpersonal barrier है वो basically तब होते हैं जब inappropriate transaction होता है, transfer होता है words का दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। So the two broad categories into which these barriers can be classified are inefficient communication skills and negative aspect nurturing in the climate. तो पहले वाले पे तो इतना डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है कि भाई जब कम्युनिकेशन स्किल जो इनएफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है बैरियर होगा। बात करते हैं इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट नर्चरिंग इन द क्लाइमेट। So negative aspect nurturing in the climate refers to a situation when negative tendencies nurtured by some people affect others around them. So this leads to a barrier as individuals start thinking only negative. So interpersonal barriers creep in as a result of the limitations in the communication skills of the encoder or the decoder or of both. In addition, they may also occur because of some disturbance in the channel or medium of communication. If two people are involved in communication, the traits that distinguish them as individuals can be the root cause of a communication problem. In a business environment, we neither attempt to change these traits, the root cause of a communication problem.
In a business environment, we neither attempt to change these traits, nor can we do it. However, we can try and understand the role of differences among individuals that lead to communication breakdowns. अब कुछ रीजन है इंटरपर्सनल बैरियर के, ठीक है. द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर इंटरपर्सनल बैरियर आर लिमिटेड वोकैबुलरी, incompatibility, that is clash of verbal and non-verbal messages, emotional outburst, communication selectivity, cultural variation, poor listening skill और noise in the channel. इनमें से अगर आपको याद है हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से आते इस कैटेगरी में, इस टाइप ऑफ बैरियर में फिर से ये सारे ही रीजन है, सारे ही कॉज है. तो हम इसे फिर से एक बार देखेंगे और जिससे कुछ नए पॉइंट्स जो मिलेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड वोकैबुलरी की. तो अगर आपके पास इनएडुकेट वोकैबुलरी है, सही वर्ड नहीं है बोलने के लिए, कम वर्ड है ना, तो वो एक तरह से वो हिंड्रेंस होगा, वो रुकावट होगी कम्युनिकेशन में. या सपोज आपने शशि थरूर की तरह आपने बहुत लंबे चौड़े बात कर ली, वर्ड यूज कर लिए, तो तब भी कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपको जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको सामने वाले के बारे में, रिसीवर के बारे में ध्यान रखते हुए बोलना होगा, ठीक है. सो inadequate vocabulary can be a major hindrance in communication. At times, we find ourselves searching for the exact word or phrase that would be appropriate for what we are trying to express. For example, during a speech, if you are at a loss for words, your communication will be very ineffective and you will leave a poor impression on the audience. Suppose speech आप दे रहे हो, वहाँ पे आप phrase that would be appropriate for what we are trying to express. For example, during a speech, if you are at a loss for words, your communication will be very ineffective and you will leave a poor impression on the audience. Suppose speech आप दे रहे हो, वहाँ पे आप words आपके पास नहीं है बोलने के लिए, ठीक है, तो आपका communication क्या होगा, बहुत ineffective हो जाएगा, unsuccessful हो जाएगा और फिर आप बहुत ही खराब impression दोगे audience पर. On the other hand, if you have a varied and substantial vocabulary, you can create a favorable impression on your listeners. Merely having a wide vocabulary is of no use unless the communicator knows how to use it. In communication, the denotative, that is literal or primary meaning, and connotative, that is implied or suggested meanings of the words used, should be absolutely clear to the receiver. Therefore, one should make constant efforts to increase one's vocabulary by regularly reading a variety of books and listening to native speakers of the language. Using a wide vocabulary regularly will also help us to make its usage comfortable and natural. Next is incompatibility, that is clash of verbal and non-verbal messages. ठीक है, तो जब एक clash है verbal और non-verbal messages में, जब दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है. सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, वहां पे आपके ठीक से बाल नहीं झड़े हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट के बटन ठीक से नहीं बन गए, जूते की, शूज की लेसेस खुली हुई हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या पॉजिटिव क्वालिटी है, और आप वहां बोलते हो कि मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, ठीक है. तो आपको पता है पैनल को एक तो देख के ही आपको पता लग जाएगा कि भाई आप तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं हो ना, ऑर्गेनाइज होते तो इस तरह की आप खुलिया में नहीं जाते वहां पे, है ना. और दूसरा एक बात और आपके बारे में सामने आती है कि आप झूठ बोल रहे हो. तो वहां पे क्या है कि एक क्लैश है वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज में. आप कह रहे हो कि आप ऑर्गेनाइज हो, लेकिन आपके पर्सनल अपीयरेंस से कहीं से लग नहीं रहा है कि आप ऑर्गेनाइज हो, ठीक है. तो यहाँ पे क्लैश है और ये क्या कर रहा है, एक तरह से बैरियर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है. यहाँ पे एक और सिचुएशन है, देखते हैं. सो इमेजिन अ सिचुएशन where a CEO introduces the newly recruited middle-level manager to the other employees. In a small speech, he conveys the message that he is very delighted to have the new manager appointed in his office. However, the expression on his face shows just the opposite of what he is saying. So the stark difference between the verbal and the non-verbal aspects of his communication leaves his listener feeling confused and puzzled. So a communicator should acclimatize himself to the communication environment, think from the angle of the listener, and then communicate. Misinterpreted nonverbal communication acts as another barrier to effective information flow instead of enhancing and enlivening verbal communication. Nonverbal cues provide a deeper insight into the sender's message. Ignoring nonverbal cues or misinterpreting them can result in the message being completely misunderstood. So, thus one should not only try to accurately gauge others' nonverbal cues,
but also be aware of one's own body language. Generalizations based on assumptions about physical appearance or dress can also lead to severe communication barriers. So physical appearance often serves as one of the most important non-verbal cues. For instance, many people initially formed negative impressions of Einstein because of his worn-out appearance. Guidelines, here are some guidelines to improve your appearance. So you have to dress according to the situation, according to the occasion. You have to wear neat and clean clothes. You have to choose an appropriate hairstyle, and you have to wear clean and polished shoes. So while interpretation of nonverbal cues requires keen observation, there are also pitfalls to guard against. For instance, there is a great disparity in the use and interpretation of nonverbal messages across countries and cultures. For example, in Kenya, a mother-in-law and a son-in-law avoid eye contact. In fact, they turn their backs to each other, whereas in America, this would be a sign of disrespect. So in brief, your nonverbal cues should consistently match your verbal messages, adding to their effectiveness and enhancing your image as a competent and interesting communicator. Next is emotional outburst. So जहाँ पर आपका emotional outburst रहेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा emotional दिखोगे, वहाँ पे बैरियर हो जाएगा, बिकॉज फिर आप अपनी फीलिंग्स में इतने ज़्यादा आप डूबे हुए हो, आप एंग्री हो, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, ठीक है. हालांकि पॉजिटिव का कम इफेक्ट होता है, इतना बैरियर नहीं क्रिएट करता जितना कि नेगेटिव क्रिएट करता है. तो यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस. You should avoid emotional outburst. So let's study an example यहाँ पर भी. So imagine that you are the president of a well-established company. अब यहाँ पे आपको क्या imagine करना है कि आप president हो किसी well-established company. There are rumors floating. You have to balance your emotions. You should avoid emotional outburst. So let's study an example यहाँ पर भी. So imagine that you are the president of a well-established company. अब यहाँ पे आपको क्या imagine करना है कि आप president हो किसी well-established company. There are rumors floating amongst your employees that you have indulged in fraudulent activities. अब आपके बारे में कुछ rumor जो है आपके employees में जो है float कर गई है कि आप बहुत ही fraudulent activity में आप involve हो. You are fully aware that these rumors are baseless. और आपको पता है कि ये rumor जो है तो baseless है, जिसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं. However, when you are asked to address the same employees, you are unable to put your point across as you are flushed with anger. लेकिन जब आपके पास मौका मिलता है कि आप सारे एम्प्लॉयज से बात करो, आप अपने पॉइंट नहीं. यू आर फुली अवेयर दैट दीज रूमर्स आर बेसलेस. और आपको पता है कि ये रूमर जो है तो बेसलेस है, जिसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं. However, when you are asked to address the same employees, you are unable to put your point across as you are flushed with anger. लेकिन जब आपके पास मौका मिलता है कि आप सारे एम्प्लॉयज से बात करो, आप अपने पॉइंट नहीं रख पाते क्योंकि आप गुस्से से भरे हुए. इमोशनल आउटबर्स्ट है आपका, ठीक है. So despite the fact that you are a confident public speaker, your communication failed as you were overwhelmed by your emotions. अब आप एक confident public speaker हो, लेकिन यहाँ पे आपका communication fail हो गया क्योंकि आप emotion से भरे हुए हो, है ना? And you are unable to convey what you want to say. In most cases, a moderate level of emotional involvement intensifies communication, making it more personal. However, excessive emotional involvement can be an obstacle to communication. For example, extreme anger can create such an emotionally charged environment that a rational discussion becomes impossible. Likewise, prejudice, stereotyping, and boredom all hinder effective communication. Positive emotions such as happiness and excitement also interfere in communication, but to a lesser extent than negative feelings. So, जैसा कि मैंने बताया कि happiness जितने भी positive emotions हैं, happiness है, excitement और भी है, तो वो भी इंटरफेयर करते हैं. लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो नेगेटिव फीलिंग से, तो नेगेटिव फीलिंग ज्यादा इफेक्ट करती है, ज्यादा इंटरफेयर करती है. सो इमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बीइंग, वेदर इन बिजनेस और इन पर्सनल एनकाउंटर्स. बाय शार्पनिंग सेल्फ अवेयरनेस, intuition and empathy, emotions can help in developing an environment that is highly conducive to good communication. Yet, situations often arise where people react negatively. Depending on their nature and the situation, this negative reaction may be classified as hostile or defensive. Hostility can be considered as a move to counterattack the threat, whereas defensiveness is resistance to it. Both reactions occur when the receiver of the message perceives some kind of threat.
And both these responses have an extremely negative impact on the communication. Messages are misinterpreted, ignored, or overreacted by people displaying such behavior. Those who witness such behavior are most likely to roll over their opinion of such people. It is important to maintain one's composure in all kinds of communication. Viewing issues from different perspectives helps develop objectivity and rational thinking, which in turn can eliminate many of the causes of hostility or defensiveness. When confronted with such negative behavior, it is essential to avoid reacting. The person displaying these emotions should be calmed down. They should preferably be taken to a quiet place to try. When confronted with such, it is important to maintain one's composure in all people. It is important to maintain one's composure in all kinds of communication. Right. And both these responses have an extremely negative impact on the communication. Messages are misinterpreted, ignored, or overreacted by people displaying such behavior. Those who witness such behavior are most likely to roll over their opinion of such people. It is important to maintain one's composure in all kinds of communication. Viewing issues from different perspectives helps develop objectivity and rational thinking, which in turn can eliminate many of the causes of hostility or defensiveness. When confronted with such negative behavior, it is essential to avoid reacting. The person displaying these emotions should be calmed down. They should preferably be taken to a quiet place to try and sort out the problem that caused their emotions to spin out of control. Now next is communication selectivity. ये भी मैं करवा ही चुकी हूँ कि जब आप कम्युनिकेशन को लेकर जब आप चूजी हो, चाहे वो रिटन चाहे वो ओरल में, जब कोई बोल रहा है और आप सिलेक्टिव हो कि हाँ आपको यही सुनना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं वो इंपॉर्टेंट है, जब आप कुछ पढ़ रहे हो रिटन डॉक्यूमेंट तो उस टाइम भी आप सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर रहे हो, आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन फिर आप नहीं पहुंच पा रही, आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ग्रास्प कर पा रहे हो. So when the receiver in a communication process pays attention only to a part of the message, he or she is imposing a barrier known as communication selectivity. This happens because he or she is interested only in that part of the message which may be of use to him. In such a situation, the sender is not at fault. और इसमें sender की कोई गलती नहीं होती, तो इसमें basically receiver की गलती होती है. It is the receiver who breaks the flow of communication. Take for example a meeting held by the CEO of the company. She has called all her senior executives from various divisions, that is production, marketing, finance, human resource, etc. And during the meeting, she discusses diverse topics. However, she may not be able to get to the entire message across to each of the participants unless she gets their undivided attention. If the production manager and the marketing manager pay attention only to matters related to their respective areas, they may not be able to get the total perspective of what the CEO is conveying. So communication selectivity may act as a barrier in written forms of communication as well. While reading any document, if you read only the part you consider useful, you are posing this barrier. So you need to avoid this barrier also. एंड आई होप मेरी अगर आवाज कहीं ब्रेक भी हो जा रही है, अगर आप तक नहीं भी पहुंच पा रही तो भी आपको पीपीटी पे दिख रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए. और बेसिकली सब कुछ लिखने का पीपीटी में मेरा एक यही ऑब्जेक्टिव है, ताकि कोई भी चीज आप मिस ना करो अगर इन केस कहीं आवाज टैंकर कर रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, ताकि आप पीपीटी पे आपको दिखे कि एग्जैक्टली क्लास में क्या चल रहा है. ठीक है, तो आई होप यू आर फॉलोइंग मी. नेक्स्ट इज कल्चरल वेरिएशंस. तो ये भी हम देख ही चुके हैं कि भाई कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से जो है बैरियर होते हैं, है ना. So this is one of the predominant interpersonal factors contributing to communication failure. As businesses are crossing national boundaries to compete on global scale, the outlook of the global and domestic workforce has changed drastically. European, Asian, and American firms have expanded their businesses worldwide to create international ties, partnership, collaborations, and affiliations. The management and employees of such companies
need to closely study the laws, customs, and business practices of their host countries while dealing with their multinational workforce. To compete successfully in such a business environment, one must overcome the communication inadequacy arising due to different languages and cultures. This factor holds good in the area of education as well. You will prove to be a successful communicator abroad during the course of your higher studies if you take pains to understand the culture of the educational campus in which you are studying. Success, whether as a student or as a professional, lies in knowing the business practices, social customs, and etiquette of the particular country one is dealing with. नेक्स्ट इज पुअर लिसनिंग स्किल्स. ठीक है, तो ये भी रिसीवर के साइड से होता है कि अगर रिसीवर बहुत अटेंटिव नहीं है ना, उसका पुअर लिसनिंग स्किल है, ठीक है, अलर्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है, सुन नहीं रहा है ठीक से, तो वो भी एक तरह से ऑब्स्टिकल है, वो भी एक तरह से रुकावट है, और वो भी एज अ बैरियर होगा. ठीक है, सो अ कॉमन ऑब्स्टिकल टू कम्युनिकेशन इज पुअर लिसनिंग हैबिट्स. We should remember that listening and hearing are not the same. तो ये मैंने बताया ही था कि भाई लिसनिंग और हियरिंग एक जैसी चीज नहीं है. हियरिंग जो है, जो भी साउंड आ रहा है आप सुन रहे हो, लेकिन लिसनिंग के लिए आपको स्पेशली फोकस करना होता है, स्पेशली आपको कॉन्सेंट्रेट करके अटेंशन दे करके आपको सुनना होता है. ठीक है, सो हियरिंग इज अ पैसिव एक्सरसाइज while listening requires careful attention and accurate decoding of the signals received from the speaker. Misunderstandings and conflict can be avoided if people listen to the message with attention. The various distractions that hinder listening can be emotional disturbances, indifference, aggression, and wandering attention. Sometimes an individual is so engrossed in his or her own thoughts and worries that he or she is unable to concentrate on listening. So, if a superior goes on shifting the papers on his or her desk while listening to his subordinate, without making eye contact with the subordinate, he or she pays divided attention to the speaker's message. This divided attention adversely affects the superior-subordinate relationship besides distorting the communication. Next is noise in the channel. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे हम बस. So noise interferes in the transmission of signals. So noise क्या है? बेसिकली अनवांटेड सिग्नल है, जो कि एक तरह से बैरियर, एक तरह से हिंड्रेंस जो है, वो हिंड्रेंस की तरह वो एक्ट करता है. So noise is any unwanted signal that acts as a hindrance in the flow of communication. It is not necessarily limited to audio disturbances, but can also occur in visual, audiovisual, written, physical, or psychological forms. All these forms of noise communicate extraneous matter, which may distract the receiver from the message and even irritate him or her. Technical or physical noise refers to the din of machines, the blare of music from a stereo system, or other such sounds which make the task of the listener difficult. Human noise can be experienced when, for instance, employees gather for a meeting and a member arrives late, distracting everybody's attention. This is an example of human noise. So here we are considering, all types of noise. In fact, अगर आपको याद हो, हमने बहुत टाइप के नॉइज पढ़े भी थे जब हम नॉइज के बारे में बता रहे थे आपको. So disturbances in telephone lines, poorly designed acoustics of a room, dim typescripts, and illegible writing are examples of technical noise. Next is organizational barrier. ठीक है, अब कंपनी में भी और कंपनी में भी कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, कोई भी कंपनी, वहाँ के लोग भी आपस में बात करेंगे, वो लोग आपस में भी बात करेंगे और अपनी कंपनी से बाहर भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे. तो वहाँ पे भी जब कम्युनिकेशन है तो बैरियर भी होगा. तो यहाँ पे उन बैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं. So communication barriers are not only limited to an individual or two people, but exist in entire organizations. Every organization, irrespective of its size, has its own communication techniques, and each nurtures its own communication climate. In large organizations where the flow of information is downward, the feedback is not guaranteed. So organizations with a flat structure usually tend to have an intricately knit communication network. Irrespective of size, all organizations have communication
policies which describe the protocol to be followed. तो सारे company, सारे organization की अपनी अलग एक communication policy होती है, अलग एक rule होता है जिसे वो follow करते हैं. And it is the structure and complexity of this protocol that usually causes communication barriers. Most large companies are realizing that a rigid hierarchical structure usually restricts the flow of communication. This is because there are numerous transfer points for communication to flow in these hierarchical systems, and each of these points has the potential to distort, delay, or lose the message. To obviate this, there should be direct contact between the sender and the receiver with minimum transfer stations. If the message is presented orally, this further reduces the dependence on transfer stations. So the main organizational barriers are as follows: too many transfer stations, fear of superiors, negative tendencies, use of inappropriate media and information overload. जिसमें से सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे उनके बारे में, इसलिए मैं बहुत क्विकली जाऊंगी, इन चीजों को भी मैं बहुत क्विकली डील करूंगी. ठीक है. सो टू मेनी ट्रांसफर स्टेशंस, तो मैंने जैसा कि बताया था कि जितने लोग इन्वॉल्व होंगे किसी कम्युनिकेशन में उतनी कंफ्यूजन होगी और उतना ही फिर बैरियर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. So the more links there are in a communication chain, the greater are the chances of miscommunication. So imagine, for instance, that your professor asks you to convey a message to X. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आपका कोई प्रोफेसर है जिन्होंने आपसे कहा है कि आपको कोई मैसेज कन्वे करना है X को. You, because of some inconvenience or sheer laziness, ask your friend why to do this job. अब आपको कोई लेजीनेस आ गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपने अपने फ्रेंड वाई से कहा कि भाई ये काम कर दे. नाउ देयर आर 4 पीपल इन्वॉल्व इन दिस कम्युनिकेशन. अब जहां पे सिर्फ आप बात कह सकते थे जाकर के, लेकिन आपने अननेसेसरली किसी और को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो अब पूरे 4 लोग हो गए इस कम्युनिकेशन. ठीक है. अब लेट अस सी हाउ द मैसेज गेट्स डिस्टॉर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांसफर स्टेशंस. अब देखते हैं कि जैसे जितने लोग बढ़ जाते हैं तो कैसे मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है. ठीक है. सो प्रोफेसर बोलता है क्या, X was supposed to meet me today regarding the submission of an assignment on magnetic theory, but I want X to meet me on Friday as I'm going out of station tomorrow. अब प्रोफेसर ने आपसे ये बोला है. अब आप क्या बोलते हो अपने फ्रेंड वाई से, ask X to meet the professor tomorrow regarding the assignment as the professor is going out of station today. अब आपका फ्रेंड वाई क्या बोलता है X से जाके, X, you have to meet the professor today as he will not be available tomorrow. अब यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन कितनी डिस्टॉर्ट हो गई है ना. आप कहा क्या गया और बात कैसे पहुंची. ठीक है. तो जितने ट्रांसफर स्टेशन होंगे इतनी प्रॉब्लम होगी और इसलिए उतना ही बैरियर फिर होगा. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ मैसेजेस गेट डिस्टॉर्टेड in huge organizations with several layers of communication channels. The message gets distorted at each level, not only because of poor listening or lack of concentration, but also because of several other reasons. Some employees may filter out the parts of the message they consider unimportant. Whatever the reasons for filtering or distorting the message, having too many transfer stations is always an obstacle to effective communication and it should be avoided. And transfer stations do serve a purpose, but having too many of them is counterproductive. Now next is fear of superiors. इसके बारे में भी हम बता चुके थे आपको पहले, फिर से रिपीट करते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि अगला टॉपिक टेक अप करें. तो कभी कभी आपको अपने सुपीरियर से डर लगता है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से बात नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो. ठीक है. तो इसी को फियर ऑफ सुपीरियर्स बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि आपको डर लगता है कहीं भाई नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कहीं बॉस नाराज ना हो जाए, है ना. तो इस डर से आप नहीं बोलते हो. ठीक है. और इस वजह से आप सही बात नहीं बोल पाते हो. So in rigidly structured organizations, fear or awe of superiors prevents subordinates from speaking frankly. An employee may not be pleased with the way his or her boss extracts work from him or her, but he is unable to put his or her point across because of fear of losing the goodwill of the boss. And as a supervisor, it is essential to create an environment which enables people to speak freely. An open environment is conducive to increasing the confidence and the goodwill of a communicator. To avoid speaking directly to their boss, some employees may shun all communication with their superiors. At the other extreme, they may present all the information they have. This is because they feel that they will be viewed in an unfavorable light by leaving out some vital information. So in written communication, this results in bulky reports where essential information is clubbed with unimportant details. So such
Unfocused messages result in a lot of wasted time. So such practices need to be eliminated by superiors to ensure that communication flows effectively in their organizations. Moreover, by encouraging active participation from their subordinates, senior officers pave the way for more ideas, resources, or solutions to come forth from their subordinates. The next is negative tendency. ये भी हम कर चुके हैं, इसलिए इसको भी मैं बहुत जल्दी बोलूंगी ताकि अगला टॉपिक टेकअप करूं. So many organizations create work groups. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क ग्रुप हो जाते हैं, क्रिएट कर लिए जाते हैं. कुछ जैसे कि होंगे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना दिया जाएगा कोई ग्रुप, कुछ ग्रुप जो है कम्युनिटी पर्पस के लिए होगा, कुछ होगा रिक्रिएशनल या सोशल पर्पस के लिए होगा. ठीक है. So while some groups are formed according to the requirements of the task at hand, such as accomplishing a particular project, many other small groups are also formed for recreational, social, or community purposes. These groups may be formal or informal and generally consist of people who share similar values, attitudes, opinions, beliefs, and behaviors. Nevertheless, on some occasions, a communication barrier can exist due to a conflict of ideas between the members and non-members of a group. For example, the student members of the sports club of an educational institution may be annoyed with non-members who oppose the club's demand for allocating more funds to purchase sports equipment. ठीक है, अब आप सपोज स्पोर्ट्स क्लब के आप जो है आप मेंबर हैं, ठीक है, और आप लोग को चाहिए कुछ फंड जिससे कि आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीद पाए, लेकिन जो मेंबर नहीं है वो लोग इस चीज को अपोज करेंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है आप दोनों में फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ ऑपोजिशन which gives rise to insider-outsider equations, which in turn pave the way for negative tendencies in the organization. Once these negative tendencies develop, they create noise in interpersonal communication. Next is use of inappropriate media. तो ये भी हम कर चुके हैं, फिर से रिपीट करेंगे. Some of the common media used in organizations are charts and graphs, telephones, fax machines, boards, emails, telephones, films and slides, computer presentations, teleconferencing, and video conferencing. While choosing the medium for a particular occasion, the advantages and disadvantages and potential barriers to communication must be considered. So while deciding upon the medium, the following factors should be considered: time, type of message, cost, and intended audience. So the telephone, for instance, would not be an ideal medium for conveying confidential information. तो आप टेलीफोन के थ्रू आप कोई भी confidential information आप नहीं कन्वे करेंगे, क्योंकि ये एक आइडियल मीडियम नहीं कंसिडर किया जाए, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन सपोज किसी ने और रिसीवर उठा के दूसरे साइड से सुन ली बात. ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको इन पर्सन जाकर आप बता कर आओ. ठीक है. So such messages are best conveyed in person, or if the receiver is located in another office, by private chat messenger. Printed letters which provide permanence are preferable for information which requires to be stored for future reference. Usually a mix of media is best for effective communication. For example, after booking an order online, a follow-up call can be made to verify whether the order has been placed or not. Next is information overload. इसके बारे में भी हम बहुत पहले बता चुके हैं कि जब टू मच इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है और फिर सामने वाला रिटेन नहीं कर पाता उस चीज़ को. ठीक है, और फिर उसका इंटरेस्ट चला जाता है और फिर वो बोर फील करने लगता है. तो बहुत ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर एज अ बैरियर हो जाएगा. ठीक है, रुकावट हो जाएगा और फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाएगा. So one of the major problems faced by organizations today is a decrease in efficiency resulting from manual handling of huge amount of data, and this is known as information overload. The usual results of information overload are fatigue, decrease in interest, and boredom. Under these circumstances, further communication is simply not possible. Very often, vital, relevant information gets mixed up with too many irrelevant details and is therefore ignored by the receiver. Thus, the quality of information is much more important than the quantity. So to reduce information overload in an organization, screening of information is mandatory. Messages should be directed only to those people who are likely to benefit from information, and major points should be highlighted, leaving out all irrelevant details. ठीक है, अब इसके बाद मैं जरा बताना चाहूंगी आपको एक और टॉपिक. ठीक है, तो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली मैं गई भी, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, एक्चुअली टाइम नहीं है.
बिकॉज आज के बाद मुझे लगता है 9 लेक्चर्स और हैं हमारे, ठीक है। Just a second, let me share screen. Yes. एक minute. Just a second. Yes, ठीक है। सो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो आप क्या करते हैं, जैसे सिर्फ आप ह्यूमन बीइंग से या सिर्फ आप अपने आप से नहीं बात करते, कभी कभी आप नॉन ह्यूमन बीइंग से या नॉन लिविंग थिंग से भी कम्युनिकेशन होता है, तो उससे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि सपोज आपके घर में पेट होगा, है ना, पेट आकर आपसे सट रहा है ना, आप उसकी पूंछ हिला रहा है, आपको देख करके आप खुश हो रहे हो, है ना, आप भी प्यार कर रहे हो, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। क्योंकि कम्युनिकेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन और सिर्फ नॉलेज नहीं ट्रांसफर होती, इमोशंस भी तो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। सो when one of the party is human being and the other party is non-human being or an inanimate object, then this is known as extrapersonal communication, ठीक है। So human beings interact with non-human entities. We often communicate with our pets. This is an example of extrapersonal communication. And any communication with the inanimate objects can also be termed so. So while we use language to communicate with the non-human entities, the non-human entity may or may not use sign language, which we interpret according to our own understanding. For example, the wagging of the tail by our pet dog when we return home from the college. अब आप ऑफिस से कॉलेज से लौट के आए हो, अब आप देख रहे हो आपका जो डॉग है, पेट डॉग, वो अपनी पूंछ हिला रहा है, ठीक है, तो उससे आप समझ जाओगे कि हाँ, ही इज हैप्पी टू सी यू, ही इज हैप्पी टू हैव यू बैक, ठीक है। फिर आप भी उससे थोड़ा सा कैरास करोगे, थोड़ा सा आप टच करोगे, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब जैसे कि आप जो है जा रहे हो रास्ते में, ठीक, वहां पे ट्रैफिक लाइट जो है जल जाती है रेड, आप रुक जाते हो, फिर ग्रीन चलती है, आप चल पड़ते हो, ये भी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। जो ट्रैफिक लाइट है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, कन्वे हो रही है चीजें, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप समझ रहे हो, वहां पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पे मेन्यू कार्ड आता है आपके सामने, ठीक, आप ह्यूमन बीइंग हो, मेन्यू कार्ड क्या है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा और आपको समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई कि हाँ, यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है खाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। सो वी स्टॉप आवर व्हीकल एट रेड लाइट एंड स्टार्ट मूविंग एट ग्रीन। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको हिंट दे दी थी कि जब आप खुद से बात करते हो, जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हो, तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। So when we communicate with ourselves, which we often do for many reasons, this is known as intrapersonal communication. So we talk or communicate to ourselves whenever we are in doubt or we are suffering from indecision or confusion or enveloped by sadness or anger, etc. अब जैसे जब आपको कोर्स ही जब आप अप्लाई कर रहे होगे बीकॉम में, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सी बातें रही होंगी कि बीकॉम करें, बीए करें, बीए करें, क्या करें, है ना। तो आपने खुद से बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आए होंगे, आपने बहुत बार खुद से बातें करी होंगी, कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे, तब आपने फाइनली ये कोर्स ज्वाइन किया होगा। तो ये सारा आपने क्या किया था उस टाइम पे? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट इज ओनली बाय कम्युनिकेटिंग विद आवरसेल्व्स दैट वी फॉर्मुलेट आवर डिसीजंस। मोरओवर, at all moments our brain is communicating with different parts of our body and sending signals for it to operate in a particular way. This is also thought to be an example of intrapersonal communication. अब जैसे ब्रेन है, ठीक है, वो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे कोई चीज अगर गर्म चीज आपके सामने, तो आपका ब्रेन ये सिग्नल दे देगा कि नहीं, अभी मत छुओ या संभाल के छुओ क्योंकि ये गर्म है। तो ये भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। So intrapersonal is the communication with oneself. It is self-communication which takes place within the mind of an individual. It is meant to reflect upon, analyze, appreciate, criticize, or clarify something to oneself. And sometimes it occurs when one is indecisive or faced with some difficult situation to choose from various choices available. It can also be understood as self-dialogue, inner speech, or inner talk, or self-talk. It promotes self-motivation, self-determination, and helps to overcome negative feelings and emotional distress. Soliloquy and monologue are some of the dramatic devices of intrapersonal
कम्युनिकेशन। अब इसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सब ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा लोग में होता है ये कम्युनिकेशन। ठीक है, मिनिमम दो लोग तो होने जरूरी, और यहाँ पे सब ह्यूमन बीइंग होंगे। ठीक है, सो इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन that we share with other human beings. It refers to the communication between two or among more than two individuals. कम से कम दो लोग होने चाहिए और दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. It is a transactional process which includes message sending and message receiving. Mainly, it involves the exchange or sharing of information. A speech, conversation, dialogue, or an interview are examples of interpersonal communication. Message can be communicated through words as well as non-verbal means. It is used both in formal as well as in informal situations. Interpersonal communication is a group activity. Size of the group depends on the purpose and the situation. Sometimes a smaller group is involved in the process, and sometimes a large group of people take part in the process. So on the basis of size, interpersonal communication can be divided into the following categories. तो size के basis पे interpersonal communication को divide किया जाता है. सबसे पहले 1-to-1, जहाँ पे सिर्फ दो लोग होते हैं. ठीक है, दो लोग communicate कर रहे होते हैं. So this type of communication occurs between only two individuals. It can be informal as well as formal, and it is also known as dyadic communication. इसे dyadic communication भी कहा जाता है. Dyadic क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायडिक का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो डायडिक कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. डायडिक मींस बेस्ड ऑन टू, एंड इट इज जनरली डन इन ओरल फॉर्म. फीडबैक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि दोनों ह्यूमन बीइंग है तो फीडबैक तो होगा ही वहां पे. Both the sender and the receiver play reversible and reciprocal roles in the process. Body language plays a vital role in this type of communication. फिर आता है group communication. Not only two but more than two persons can also further the process of communication. अब यहाँ पे दो से ज्यादा लोग में communication हो रहा है, इसलिए यहाँ पे group communication बोला जा रहा है इसे. ठीक है, so sometimes one person conveys a message to a group of persons, and sometimes a group of persons convey the message to another group. अब कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी होता है वो पूरे ग्रुप को मैसेज कन्वे कर रहा होता है. ठीक है, जैसे मैं आप सब तक मैसेज कन्वे कर रही हूँ, आप सब तक कम्युनिकेट कर रही हूँ चीजें. ठीक, या कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप तक कुछ कन्वे कर रहा होता है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रिफर्ड टू एज ग्रुप कम्युनिकेशन. अब ग्रुप कम्युनिकेशन भी डिवाइड किया जाता है कई टाइप्स में. सबसे पहले स्मॉल ग्रुप. ठीक है, so this type of communication takes place among the members of a smaller group consisting of more than 2 but not more than 40 or 50 individuals. तो small group communication जो है वो basically smaller group में होता है. ठीक है, जिसमें दो लोग से ज्यादा तो होते हैं लेकिन 40-50 लोग से ज्यादा नहीं होते. All the members remain present at the same place or connected through some mechanical or electronic device. They share a common goal. Feedback is an essential characteristic of this type of communication. It facilitates faster delivery of the message, and it can be formal as well as informal. For example, the conversation among the members of a family, students of a class, or passengers of a bus, etc. And instead of individuals, the communication can take place between two groups, like the communication between two families or so. फिर आता है आपका large group communication. So large से समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे. ठीक है, so this type of communication involves a large number of people on individual or group basis. The group size can be from hundreds to thousands. इसमें 100 से 1000 लोग होते हैं. It is usually conducted in an organized or formal way. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए organized और formal way में conduct किया जाता है. For example, addressed by some political leader in a gathering, religious preaching at a religious place or so, and it is also known as public communication, and it generally occurs face to face. All the participants remain present at the same place, and it requires some mechanical gadget like microphone, amplifier, etc. to transmit the message. फिर है next level, mass communication. ठीक है, next. So when the communication is with a large audience, then it is known as mass communication. ठीक है, जब communication जब mass के साथ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, तो उसे mass communication कहते हैं. Mediums like newspaper, magazines, journals, books, audiovisual mediums, radio, TV and internet are used to communicate with the masses. ये मैं next class में अब करवाती हूँ because it's time mass communication से. ठीक है,
So I'll stop sharing.